हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली जैसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ। सैमसंग का सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 4 राउंड्स का था। राउंड 1 में सबसे पहले राउंड था ऑनलाइन कोडिंग राउंड, और ऑनेस्टली ये काफ़ी चैलेंजिंग था। इस राउंड में एक ही क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन वो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम था। क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट बीएफएस और डीएफएस ट्रैवर्सल पर बेस्ड था। प्रॉब्लम समझने में ही काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि ग्राफ का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था, मल्टीपल कंडीशंस थी, एज केसेस को ध्यान पे रखना था। हमें 3 आवर्स का टाइम दिया गया था और टारगेट था 50 टेस्ट केसेस पास करना। यह राउंड एक्चुअली लॉजिक, पैसेंस और प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है, सिर्फ कोडिंग स्पीड नहीं। एंड देन राउंड 2 पेपर पेन टेस्ट था। जो कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड क्लियर कर गए उनका पेपर पेन टेस्ट हुआ। इस राउंड में एक डीएसए से प्रॉब्लम दिया गया था, जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना था। एंड देन राउंड 3 वाज टेक्निकल इंटरव्यू। इस राउंड में इंटरव्यूअर ने डीएसए क्वेश्चंस पूछे थे, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं अब। एंड देन आफ्टर दैट लास्ट इंटरव्यू वाज एचआर इंटरव्यू, जिसमें पजल्स पूछे गए थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हेलो, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? I am giving you a problem. You are given an array of non-negative integers where each element represents the maximum jump length from that position. So your task is to determine whether it is possible to reach the last index starting from the first index. So take a moment and explain your approach. Now let's move to the next problem. This problem is typically solved using a hash map. However, here you are not allowed to use map or hash map. So what alternative data structures can you use to solve the problem? Like, how would you handle frequency counting or lookups without a hash map? What trade-offs are you making in terms of time and space complexity? This was a question based on the hash map implementation. Okay, that's fine. Let's talk about heaps. What is a heap? What are the different types of heaps? In what scenarios would you prefer a heap over other data structures? So please answer with clarity and include at least one real world use cases. Okay, explain the deletion operation in a heap. What happens when the root element is deleted? How do you restore the heap property? And what is the time complexity of the deletion operation and why? Let's move to the final problem of this round. You are given a string. Your tasks are generate all suffixes of the string, store them efficiently, sort them in lexicographical order, and return the kth word. Which data structure will you use here, and explain the approach? Thank you for taking the time to go through these questions and for explaining your thought process. We appreciate the effort you put into reasoning through the problems and discussing your approach. From our side, we have covered all the questions planned for this round. If you have any questions for us regarding the role, the team, or the next steps in the process, this would be a good time to ask. Thank you once again for your time and participation. Have a great day.